In this video, we will discuss some questions of exercise 1.1. Let us start with question number 1. Here in question number 1, we have to determine whether the given relations are reflexive, symmetric or transitive. So the first part is what a relation is given, and this relation is defined on the set A, where we have elements 1, 2, 3, 4 up to 14. Define as xy is such that 3x minus y is equal to 0. We check for reflexive. reflexive के लिए हम चेक करेंगे. See, we take one element of this set. Okay. According to this relation, if y is equal to x, if x belongs to r, ये x जो है r से belongs करेगा, तो y की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, x रिप्लेस कर देंगे, तो क्या होना चाहिए, 3x माइनस x जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए. बट 3x माइनस x इज वॉट 2x, एंड 2x इज नॉट इक्वल टू 0. देखो डबल ऑफ एनी एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू 0. Means what we conclude that x is not belongs to R. Means the element do not have itself as a image. Means R is not a reflexive. Here R is not a reflexive. Second, for symmetric के लिए हम क्या याद लेते हैं. सिमेट्रिक के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. 1 3 1 3. देखिए कहीं ना कहीं इसका मीनिंग ये भी है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स 3x इज इक्वल टू वाई. मीन्स एलिमेंट की जो इमेज है उसकी 3 टाइम्स हो जाएगी. ये 1 3 बिलोंग्स टू r. ठीक है. लकी दिस y इज 3x, y इज 3 इंटू दिस. ओके. बट अगर इसका अपोजिट कर देंगे तो हो जाएगा 3 1. तो 1 इज इक्वल टू 3 इंटू ये हो जाएगा क्या, नहीं होगा. या फिर हम यहां रखें कि 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1, क्योंकि हम किसके लिए चेक कर रहे हैं 3 1 के लिए. तो y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3. तो अगर y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये सा होगा. और दिस इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 3 1 इज नॉट बिलोंग्स टू r. एंड इफ 3 1 इज नॉट बिलोंग्स टू r मीन्स r इज नॉट सिमेट्रिक. r जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा. नेक्स्ट वन हम चलते हैं ट्रांजिटिव के लिए. तो फॉर transitive, see, we take if 1 3 belongs to R and 3, अगर हम 3 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ 3 लेंगे तो 3 3 9. तो 3 की इमेज क्या हो जाएगी, 9 belongs to R. ओके. So 1 3 belongs to R, 3 9 belongs to R. Then we have to do that 1 9 belongs to R. If 1 9 belongs to R means x क्या हो जाएगा आपका 1 और y क्या हो जाएगा 9. तो इसका मतलब होना क्या चाहिए, 3 into x means 3 into 1 minus y 9 is equal to 0 होना चाहिए. ये क्या नहीं है, is not equal to 0. Okay, this implies 1 9 is not belongs to R. This implies this relation is not transitive. ये जो relation है, given relation is not transitive relation. Second part of this question number 1. Here is a relation which is defined on the natural number, and the relation is what, y is equal to x plus 5. Means image of a element is 5 more than that element. See, so 1 for reflexive के लिए हम
एक एलिमेंट ले लेते हैं 1, दैट 1 इज बिलोंग्स टू n एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस 5। अगर मैं यहाँ पे इसको 1 से रिप्लेस करूंगा तो ये 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 होगा तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5, बट this is not satisfied here. Means what? 1 1 is not belongs to R, and if 1 1 is not belongs to R means what? This R is not reflexive. ये जो R जो है वो reflexive नहीं होगा. Now symmetric के लिए सिमेट्रिक के लिए भी हम एग्जांपल ले लेते हैं. इफ 1 6 बिलोंग्स टू R, ओके, अब सिंपल है कि अगर x इज इक्वल टू 1 होगा तो y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो 1 6 बिलोंग्स टू R. अब 6 1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए. 6 1 बिलोंग्स टू R कब होगा? y क्या है यहाँ? 1. y इज इक्वल टू x प्लस 5 मीन्स ये 6 प्लस 5 होना चाहिए, लेकिन है नहीं है. ठीक है, मीन्स सिंस व्हाट 1 is not equal to 6 plus 5, this implies what 6 1 is not belongs to R, and if 6 1 is not belongs to R means what R is not symmetric. This relation R is not symmetric. Now for ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं इसकी. यस, वी टेक एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ओके, सी एंड एक्स इज लेस देन 4. See, here we may take x is equal to 1 here. Okay, here restriction for x is given. X is less than 4. So we may take x is equal to 1. Okay, and here see, if 1 6 belongs to R, तो obviously those 6 cannot be the x. ठीक है, 6 जो है वो x हो ही नहीं सकता. ठीक, और 6 x नहीं हो सकता तो ये इससे बिलोंग करेगी नहीं. ये ऐसा भी हम लिख सकते हैं. यस, here if xy belongs to R means y is equal to x plus 5, and if yz belongs to R means z. See, y is equal to x plus 5 and here z is equal to what? Y plus 5. This is first and second. So from first z is equal to y plus 5. Now replacing y from from second it is z is equal to y plus 5. Now z is equal to y. Replace y by x plus 5. X plus 5 plus 5 using first relation. So z is equal to x plus 10. But according to the definition, this should be x plus 5. Z should be x plus 5. Z x plus 5 होगा तब आपका x z रिलेशन को बिलोंग करेगा. This implies what? This xz is not belongs to R, and if it is not belongs to R means R is not transitive. This relation is not transitive relation. See the third part. Relation R is defined on this set, and the relation is what xy is such that y is divisible by x, means the image is divisible by that element. So for symmetric, for reflexive proof करने के लिए, see every number from 1 to 6 is divisible by itself. So for all x belongs to this set, x is divisible by x. The number is divisible by itself, and if number is divisible by x itself means xx belongs to R.
x and x belongs to R. In if x and x belongs to R means this implies R is reflexive. Now for symmetric. See, clearly, if y is divisible by x, then x is divisible by y. It is not possible. Okay. See, we take an example. Yes. If 1, 3 means this 3 is divisible by 1. So 1, 3 belongs to R. Okay. But 3 is divisible by 1 according to the definition of relation. But 1 is not divisible by 1 is not divisible by 3. This implies 3 1 is not belongs to R. If 3 1 is not belongs to R means what? R is not symmetric. Because 1 3 belongs to R but 3 1 is not belongs to R. Now for transitive. Okay. Now we take an example. See, for all x, y and z belongs to A. Yes. If xy belongs to R and yz belongs to R. Xy belongs to R means what? Y is divisible by, this implies y is divisible by x and z is divisible by y. If y is divisible by x, then y can be written as something into x and z can be written as something into y. These somethings are what? Natural numbers. Okay. See, this is first and this is second. So from second, what we have? Z is equal to n into y and z is equal to, replacing y by this, so you will get mx using first. So z is equal to n into my, means product of two natural number is natural number. So z is equal to natural number into x, means z is divisible by x. This implies z is divisible by x. If z is divisible by x means xz belongs to R. If xz belongs to R means R is transitive. Because here we prove, take what? xy is belongs to R, yz is belongs to R, and we prove what? xz belongs to R. So it is transitive relation. Fourth part, R is defined on Z. Z means set of integers, and R is such that what? xy is such that x minus y is an integer, means difference of these two will be what? Integer. So we check for reflexive. See, we know that the difference of two integer is a integer. So if we take two same integer, means if for all x belongs to z, x minus x is what? 0, and 0 is what? It is belongs to integer, or 0 is what? Integer. This is an integer. So what we conclude? X belongs to R, and this x belongs to R means reflexive हो गया. This implies R is reflexive.
Now for symmetric, see, we take two element x and y belongs to z, and if x y belongs to r, x y belongs to r, this implies what? X minus y is an integer. x माइनस y क्या होगा? इंटीजर होगा, और इंटीजर का मैं नेगेटिव कर दूंगा तो वो भी इंटीजर होगा, तो इसका नेगेटिव कर दें। इसका मतलब क्या होगा? अगर इसको मैं सोल्व करूं तो क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस वाई, और इसको मैं लिख सकता हूं वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर। ओके, so y minus x is integer, so according to definition क्या हो जाएगा? y comma x belongs to r, and x y belongs to r, and we prove that y x belongs to r, means this implies r is symmetric. This r is symmetric. Here we prove this r is symmetric. Yes. Now, for transitive, we take x, y, z belongs to z. If x, y belongs to r and yz belongs to r, so x y belongs to r means what? X minus y is integer, yz belongs to r means y minus z is integer, means both are what? Integers. Okay, and we know that the sum of two integer is again integer, since sum of two integers is an integer. Okay, so this implies what? X minus y plus y minus z is an integer, means y cancel, you will get x minus z is an integer. If x minus z is integer, means what? X z belongs to r according to this definition. So here we take x y belongs to r, y z belongs to r, and we prove x z belongs to r, means this r is what? Transitive. Question number 2 of this exercise, R, the relation R is defined on the set R. R means the set of real number, and this relation is defined AB such that A is less than equal to B square. We have to prove that it is neither reflexive nor symmetric and nor transitive. So for reflexive, we take such example where this relation is not satisfy the property of reflexive relation. See, 1 upon 2, we know that 1 upon 2 is a real number. 1 upon 2 and 1 upon 2 square. If you compare this 1 upon 2 and 1 upon 2 square, then 1 upon 2 is not less than 1 upon 2 square. Okay, 1 upon 2 square is 1 upon 4, and 1 upon 4 is less than 1 upon 2. Means ये जो relation है यहाँ satisfy नहीं हो रहा. Means this is not less than or equal to 1 upon 2 square. Means what we conclude, 1 upon 2 comma 1 upon 2 is not belongs to R. And if it is not belongs to R, means R is not reflexive. इसका मतलब क्या हो जाएगा कि R जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. नेक्स्ट वन,
सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। इफ 2, -2 belongs to R, see 2 -2 square, -2 square is what? 4, 4 is greater than 2, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यस। लेकिन अगर इसका अपन अपोजिट करें तो अपोजिट क्या हो जाएगा? -2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ये -2 सॉरी उल्टा अगर हम करें, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ऐसा सोचते हैं, सिंपल सा 1 2, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 1 2 बिलोंग्स टू आर, यस, सेटिस्फाई करवाते हैं रिलेशन। 1 is a is 1 is greater than equal to 2 square, yes it is 2, तो 1 2 belongs to R। अब 2 1 के लिए चेक करते हैं कि whether 2 1 is belongs to R or not, तो a is what? 2 is less than equal to 1 square, ये क्या? नहीं है, 1 square is less than this, not greater than this, okay। So here we will write that this 2 is not less than or equal to 1 square. This implies 2 1 is not belongs to R, and if 2 1 is not belongs to R, then this R is not symmetric, R जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए, और ट्रांजिटिव के लिए फिर अपन एक एग्जांपल से प्रूव कर देते हैं कि दैट इज नॉट ट्रांजिटिव। वी टेक एन एग्जांपल, 2 -2 बिलोंग्स टू R, अभी मैंने करके बताया था ना, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गया, एंड वन मोर वी टेक, whose first element will be what? -2. So -2, we take -2, -1 belongs to R. ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। -2 is less than equal to -1 square. -1 square is what? 1. -1 का स्क्वायर 1, तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होगा। अब हमें चेक करना है कि 2 और -1, 2 और -1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 2 और -1 के लिए देखिए, 2 यहाँ a is equal to 2 is less than equal to -1 square, तो -1 square is 1 and -1 square 1, 2 less than 1 means it is wrong, so we write, but 2 is not less than or equal to -1 square, ठीक है। This implies what? 2 - 1 is not belongs to R. This implies R is not transitive relation. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो